Good afternoon, dear students. Good afternoon, everyone. I hope everyone's fit and fine. So, guys, welcome to Unacademy, India's largest online learning platform, and subscribe Unacademy right now. If you are subscribing Unacademy, you will be getting bundle of joys. You will be getting daily live classes. In live classes में आप अपने educators अपने questions, अपने doubt, अपने queries raise कर सकते हैं. You will getting structured course in which the topic will be covered from basic to the advanced level. You will getting live test and quizzes. In live test and quizzes में आप अपने ऑल इंडिया रैंकिंग देख सकते हैं, अपनी परफॉर्मेंस एनालिसिस देख सकते हैं. एंड गाइस यू विल गेटिंग अनलिमिटेड एक्सेस. एक सिंगल सब्सक्रिप्शन से आप पूरे यूपीएससी की प्रिपरेशन कर सकते हैं. इसमें प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड. सो गाइस, download an academy app right now and just experience the new era of learning. Myself, Gaurav Gupta, I am author, mentor, and motivator. Having experience of 8 years, I have mentored more than 85,000 students across the country, both online and offline. I've been associated with various prestigious institutes in Delhi. This is my Unacademy profile link. Just download Unacademy app and follow my profile. आपको lectures के सभी update notification के थ्रू यहाँ पे मिल जाएंगे. And this is my official Telegram channel. इसको join कर लीजिए. lecture का PDF आपको यहाँ पे मिल जाएगा. So guys, you will get classes from top educators including me. आप अपने पसंद के educator से अपने time, अपने convenience के according पढ़ सकते हैं. Right now, there are 15,000 plus courses which are available on Unacademy, and these courses has been designed finally to ensure your success in the exam. So guys, Unacademy Plus में आपको मिलती है live classes, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस सेशंस और स्ट्रक्चर शेड्यूल. इसकी 1 ईयर की फी है 49,500, 2 ईयर्स की फीस है 72,000 एंड 3 ईयर्स की फीस है 90,000. बट जैसे ही आप ये कोड अप्लाई करेंगे और आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा. आपकी 1 ईयर की फी हो जाएगी 44,550, 2 ईयर्स की फीस हो जाएगी 64,800 एंड 3 ईयर्स की फीस हो जाएगी 81,000 रुपीज. तो गाइस, अनअकैडमी आइकॉनिक एक लेटेस्ट रेवोल्यूशनरी एडवांस लेवल प्रोग्राम है जिसमें आपको प्लस कोर्स के सारे फीचर तो हम प्रोवाइड करेंगे ही, बट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें आपको एक पर्सनल कोच, एक पर्सनल मेंटर भी आपको असाइन हो जाएंगे. ये पर्सनल कोच पर, ये पर्सनल मेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि आप टाइम पे पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. आपकी स्टडीज को मॉनिटर करने का काम इनका पूरा रहेगा. किस टॉपिक को पहले कवर करना है, किस टॉपिक को बाद में कवर करना है, इस तरह की माइक्रो लेवल के इनपुट्स के साथ ये आपको हेल्प करेंगे. सो यू विल गेटिंग डेली मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस, क्योंकि आप जानते हैं कि मेंस में आपने जो स्कोर किया है, that is the ultimate score which will decide your fate in this exam. अगर आप क्वालिफाई कर रहे हैं तो किस रैंक से कर रहे हैं, राइट. एवरीथिंग विल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ योर मेंस स्कोर. यानी कि इंटरव्यू में अगर मान लीजिए किसी स्टूडेंट के थोड़े 10 नंबर कम भी रह जाते हैं तो भी वो अच्छा स्कोर कर सकता है, अच्छी रैंक ला सकता है, प्रोवाइडेड मेंस में उसने अच्छा स्कोर उठा रखा हो. यू विल गेटिंग स्टडी प्लानर, यानी कि एक कस्टमाइज्ड स्टडी प्लानर आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको तैयार करके मिलता है. फॉर एग्जांपल, आप मान लीजिए वर्किंग स्टूडेंट है, आपने कहा कि सर मैं तो 8 आवर्स या 9 आवर्स की मेरी जॉब है, उसके अलावा मैं कैसे पढ़ाई करूंगा या करूंगी. तो उसी के हिसाब से आपके पर्सनल मेंटर आपको गाइड करेंगे, आपको एक कस्टमाइज स्टडी प्लान आपको बना के देंगे. एंड यू विल गेटिंग पर्सनलाइज फीडबैक ऑल्सो. इसमें आपको बेसिकली आपने कोई आंसर लिखा है, कोई एस्से लिखा है, जीएस का आंसर लिखा है या ऑप्शनल का आंसर लिखा है, वो सब आप इवेल्युएट भी करा सकते हैं अपने मेंटर से. तो इसकी 1 ईयर की फीस है 69,500, 2 ईयर्स की फीस है 1,07,000 एंड 3 ईयर्स की फीस है 1,41,000. जैसे ही आप ये कोड अप्लाई करेंगे GG10 कोड याद रखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. जस्ट डू रिमेंबर दिस कोड GG10. जैसे आप कोड अप्लाई करेंगे आपको इंस्टेंटली 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा. आपकी 1 ईयर की फीस हो जाएगी 62,550, इसकी 2 ईयर्स की फीस हो जाएगी 96,300 एंड 3 ईयर्स की फीस हो जाएगी 1,26,900 रुपीज. गाइस, अनअकैडमी ने ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन भी लॉन्च कर दिया है. इसकी 1 ईयर की फी है 27,500, 2 ईयर्स की 40,000 एंड 3 ईयर्स की 50,000 है एंड आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा व्हेन यू अप्लाई दिस GG10 कोड. सो गाइस, सारे ही पॉपुलर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हमारे पास अवेलेबल है. सो जस्ट एक्सपीरियंस द न्यू ईयर ऑफ लर्निंग एंड जस्ट जॉइन इट राइट नाउ एंड यूज माय कोड GG10 टू गेट 10% डिस्काउंट. नाउ लेट अस स्टार्ट द टॉपिक. क्वेश्चन नंबर 1, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइट फॉर इन सीटू मेथड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा. इन सीटू मेथड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा का मतलब होता है कि जहां पे जो स्पीशीज है वो अपने नेचुरल हैबिटेट में ही सर्वाइव करते हुए जो है कंजर्व की जा रही है. तो इन सीटू यानी कि जहां की बिलोंग करती है साइट, जहां की स्पीशीज बिलोंग करती है, वो उसी साइट पे ही रहकर जो है सर्वाइव हो रही है, कंजर्व हो रही है. तो एक्स सीटू का मतलब क्या होता है कि जब यहां से हटा के कहीं और किसी चीज को कंजर्व किया जा रहा है. सो ऑप्शन ए बायोस्फीयर रिजर्व, ऑप्शन बी बॉटेनिकल गार्डन, ओके, ऑप्शन सी नेशनल पार्क एंड ऑप्शन डी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. यस, क्वेश्चन नंबर 1. सो गाइस, इसका आंसर होगा बॉटेनिकल गार्डन. अब बॉटेनिकल गार्डन तो आप देखेंगे शहरों में भी कई जगह आपको मिल जाएंगे. कोलकाता का बॉटेनिकल गार्डन है, तो दिल्ली बॉटेनिकल गार्डन है. इनफैक्ट बॉटेनिकल गार्डन नोएडा में बहुत पॉपुलर है. ओके, सो बेसिकली क्या है बॉटेनिकल गार्डन्स, क्या है ये, यहाँ पे प्रेसिजन के साथ स्पेशलाइज्ड वे में जो है जो प्लांट्स है उनको कंजर्व कराया जाता है उनके नेचुरल हैबिटेट से दूर लाकर. ओके, बाकी बायोस्फीयर रिजर्व है, नेशनल पार्क है या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो दे आर द नेचुरल हैबिटेट्स.
ओके, तो इन सीटू मेथड में बॉटेनिकल गार्डन नहीं आएगा, इन सीटू मेथड में कंजर्वेशन में आएगा बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बॉटेनिकल गार्डन या जू किस कैटेगरी में आएगा? ये आएगा एक्स सीटू कंजर्वेशन में, ये भी साथ के साथ ध्यान रखना, इट विल फॉल इन द कैटेगरी ऑफ एक्स सीटू कंजर्वेशन। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। Then botanical garden is not a site for in situ method of conservation of flora. In situ conservation is on-site conservation or the conservation of genetic resources in natural populations of plant or animal species, such as forest genetic resources and natural population of tree species. तो सिंपल सी चीज है, जहां पे नेचुरल हैबिटेट है स्पीशीज का, वहीं पे उस पर्टिकुलर स्पीशीज को हम कंजर्व कर रहे हैं, उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सो ये बेसिकली इन सीटू कंजर्वेशन है, प्रोटेक्शन हो गया। एंड व्हेन वी आर बेसिकली कंजर्विंग देम आउटसाइड देयर नेचुरल हैबिटेट, तो इट विल बी एक्स सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू एक्स सीटू प्लीज ध्यान रखना सब लोग। आई होप सबको याद रहेगा ये। ओके, आई होप सबको ये याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Consider the following statement. Number 1 is biodiversity is normally greater in the lower latitudes as compared to the higher latitude. Second, along the mountain gradients, biodiversity is normally greater in the lower altitude as compared to the higher altitude. Which of the statement given above are correct? So option A 1 only, option B 2 only, option C both 1 and 2, and option D neither 1 nor 2. So please answer this question now. Please answer this question now. Biodiversity is normally greater in the lower latitudes as compared to the higher latitude. Second, along the mountain gradients, biodiversity is normally greater in the lower altitude as compared to higher altitude. देखो पहले latitude को देखते हैं। तो मान लो दिस इज अर्थ, ओके, मानने के लिए बोला है क्योंकि शेप थोड़ी सी डिस्टॉर्ट हो गई है। एंड दिस इज इक्वेटर। तो सनरेज जो है इक्वेटर पे एकदम सीधा पड़ती है। अब इक्वेटर वाले रीजन में आप देखेंगे कि जब सनरेज एकदम सीधा पड़ रही है तो अबंडेंट सनशाइन भी इसको मिल रही है। और इसके कंपैरिजन हम देखते हैं तो ये जो रीजन है पोल्स वाले या सब पोलर रीजन, यहाँ पे सनराइज जो है सनरेज जो है कंपैरेटिवली लेस पड़ रही है एज कम्पेयर टू इक्वेटर। अब होता क्या है, इक्वेटर पे सनरेज क्योंकि बहुत ज़्यादा पड़ रही है तो क्या होता है, जो वाटर बॉडीज है उनका इवेपोरेशन भी ज़्यादा होता है। जब इनका इवेपोरेशन ज़्यादा होगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये ऊपर जाके क्लाउड फॉर्मेशन करेंगे, कंडेंसेशन करेंगे, और कंडेंसेशन करके क्या होगा, क्लाउड फॉर्म कर रहे हैं, ये रेनफॉल करेंगे। सो इस एरिया में क्या है, बहुत ज़्यादा सनरेज भी अवेलेबल है, सनलाइट भी अवेलेबल है, और एट द सेम टाइम यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल भी हो रही है डेली बेसिस पे, जिसको हम कन्वेक्शनल रेनफॉल बोलते हैं। सो गाइस ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि कोई भी प्लांट होता है उसको ग्रो होने के लिए दो ही चीज़ चाहिए होती है, एक सनरेज चाहिए होती है फोटोसिंथेसिस के लिए, दूसरा उसको पानी चाहिए होता है। दोनों ही यहाँ पे अबंडेंस में अवेलेबल है, सरप्लस में अवेलेबल है। तो व्हाट हैपन्स, यहाँ जो ट्रीज है बहुत डेंसली ग्रो होते हैं और ट्रीज की हाइट काफी ज्यादा ऊंची होती है क्योंकि इनमें आपस में कंपटीशन होता है ज्यादा से ज्यादा सनरेज को कैच करने के लिए। सो एक्सेप्शनली बहुत हाई ग्रोथ होती है। तो जब ट्रीज ज्यादा होंगे, राइट, यस, गुड आफ्टरनून विष्णु, जब ट्रीज बहुत ज्यादा डेंस होंगे तो क्या होगा, कई सारे छोटे छोटे प्लांट्स होंगे जिनको सनरेज नहीं मिल पा रही होंगी। तो ये प्लांट्स क्या करते हैं, ये अपने आप को एपिफाइटिक ग्रोथ में कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी बेल की फॉर्म में, और ये ट्रीज से लपेटते हुए ऊपर पहुंच जाते हैं ताकि इनके अपर पोर्शन को फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हेल्प मिलती रहे और नीचे के पोर्शन को इसको न्यूट्रिएंट मिलते रहते हैं। तो क्या होता है, ये बहुत ही डेंस फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। जितना ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट होगा उतनी ज़्यादा डेंस वाइल्ड लाइफ भी वहाँ पे मिल जाएगी। सो क्या कहने वाला है कि बायोडाइवर्सिटी भी ज़्यादा मिलेगी। तो इक्वेटर पे बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा मिलती है, पोल पे बायोडाइवर्सिटी कम मिलती है। तो हमेशा ये रूल बना लेना कि बायोडाइवर्सिटी डिक्रीजेज एज वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स पोल। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। Then along the mountain gradients, biodiversity is normally greater in the lower altitude as compared to the higher altitude. अब कोई माउंटेन है गाइस, सोचिए माउंटेन है, माउंटेन पे जैसे जैसे माउंटेन के इनिशियल जब हम चलते हैं तो यहाँ पे सब ट्रॉपिकल वेजिटेशन मिलती है, देन इसके बाद अलग वेजिटेशन मिलेगी। लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद क्या होगा, जैसे जैसे माउंटेन को ऊपर क्लाइम करेंगे वेजिटेशन डिक्रीज होती चली जाएगी। ओके, तो ऑब्वियसली क्या होगा कि बायोडाइवर्सिटी भी कंपैरेटिवली डिक्रीज होती चली जाएगी। सो लोअर एल्टीट्यूड से ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी मिलेगी, हायर एल्टीट्यूड्स में अगर हम बात करें तो वहाँ पे स्नो कवर्ड रीजन या फिर उसके साथ साथ थोड़े ग्रासलैंड्स मिल जाएंगे। सो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है और आंसर विल बी ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। ओके, देखो समझ के ऐसे क्वेश्चन को समझ के करने में बहुत मजा आता है क्योंकि जो है एक तो हमारे कॉन्सेप्ट्स को और दोबारा से क्लैरिफाई कर देता है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि एग्जाम में कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस, अप्लाइड क्वेश्चंस के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमारे लिए बहुत फायदे बन रहता है इस चीज़ को समझने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट कार्बन क्रेडिट्स।
ऑप्शन ए, carbon credits are awarded to countries or groups that have reduced greenhouse gases below their emission quota. The carbon credit system was ratified in conjunction with the Kyoto Protocol. Carbon credits are traded at a price fixed from time to time by the United Nations Environment Programme. D, the goal of the carbon credit system is to limit the increase of carbon dioxide emission. Question number 3. Please answer this question. Yes. थैंक यू विष्णु. क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दीजिए. प्लीज आंसर क्वेश्चन नंबर 3. Which of the following statement is true about carbon credits? Carbon credits are awarded to countries or groups that have reduced greenhouse gases below their emission quota. The carbon credit system was ratified in conjunction with the Kyoto Protocol. Carbon credits are traded at a fixed price fixed from time to time by the UNEP. And the goal of the carbon credit system is to limit the increase of carbon dioxide emission. Question number 3. Question number 3. So basically कार्बन क्रेडिट्स जो मिलते हैं वो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए. कार्बन क्रेडिट्स आर अवॉर्डेड टू द कंट्रीज और ग्रुप्स दैट हैव रिड्यूस्ड ग्रीन हाउस गैसेस बिलो देयर एमिशन कोटा. जो आप बोल रहे हो इसका जो द गोल ऑफ द कार्बन क्रेडिट सिस्टम इज टू लिमिट द इंक्रीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन. तो देखने में सभी बहुत नियर बाय जैसे ही लग रहे होंगे, तो लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं कार्बन क्रेडिट सिस्टम का, तो ये बेसिकली रिड्यूस्ड ग्रीन हाउस गैसेस का एक कोटा यहाँ पे बेसिकली दिया जा रहा है, राइट. So a carbon credit is a permit that allows the company that holds it to emit a certain amount of carbon dioxide or other greenhouse gases. One credit permits the emission of a mass equal to 1 ton of carbon dioxide. इसके साथ साथ एक चीज और होती है कि कार्बन क्रेडिट की ट्रेडिंग भी होती है. मान लो दो कंट्रीज है ए और बी, यानी दो इंडस्ट्री ए और बी, इसको कार्बन क्रेडिट मिला हुआ है 10 का और इसको भी कार्बन क्रेडिट मिला हुआ है 10 का. अब क्या हुआ, ए की इंडस्ट्री, ए जो इंडस्ट्री है या इसमें ज्यादा काम हुआ नहीं है, ज्यादा प्रोडक्शन हुआ नहीं है, तो इसने बस 10 में से सिर्फ 5 क्रेडिट्स ही यूज किए हैं और इसके पास 5 क्रेडिट्स जो है सरप्लस में बच गए हैं. ऑन द अदर हैंड जो बी है, बी ने 10 के 10 एग्जॉस्ट कर दिया, इसका प्रोडक्शन ज्यादा हुआ, इससे 10 के 10 एग्जॉस्ट कर दिया, इसको और 5 क्रेडिट्स की जरूरत है कार्बन क्रेडिट्स की. तो ऐसे कंडीशन क्या करेगा, ये ए से परचेज कर लेगा क्रेडिट्स और इसके बदले में ये एमिशन कर लेगा, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं. विच ऑफ द अबव आर टाइगर रिजर्व्स? बांदीपुर, भीतरकनिका, मानस और सुंदरबंस, इनमें से कौन सी टाइगर रिजर्व है? क्वेश्चन नंबर 4. यस, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है. यस, प्लीज आंसर इस क्वेश्चन गाइस. इनमें से कौन सा टाइगर रिजर्व है? बांदीपुर, भीतरकनिका, मानस, सुंदरबन. चूज द करेक्ट कोड. ऑप्शन ए 1 and 2 only, ऑप्शन बी 1, 3 and 4 only, ऑप्शन सी 2, 3 and 4 only, एंड ऑप्शन डी 1, 2, 3 and 4. यस, ओके. विष्णु, देखो भीतरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है. भीतरकनिका इज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और ये बेसिकली मैनग्रोव्स के प्रोटेक्शन के लिए, भीतरकनिका मैनग्रोव्स भी फेमस है. ओडिशा में लोकेटेड है. ब्राह्मणी रिवर यहाँ पे ड्रेन होती है, ये ब्राह्मणी रिवर भीतरकनिका से ही होती हुई जाती है एंड ये बेसिकली क्रोकोडाइल्स के लिए फेमस है. ओके. बांदीपुर टाइगर रिजर्व, मानस टाइगर रिजर्व, सुंदरबंस बेसिकली टाइगर्स यहाँ पे रिजर्व है ये. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 1, 3 and 4 only. ओके. सो दीज आर द टाइगर रिजर्व्स. तो आप देखेंगे जैसे कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व अभी पिछले हफ्ते न्यूज में था, क्योंकि वहां पे TX2 जो प्रोग्राम है, यानी कि जिसमें टाइगर्स की पॉपुलेशन को डबल करना है, तो इन्होंने वो टारगेट अचीव कर लिया और बहुत टाइम से, काफी पहले अचीव कर लिया है. सो इस वजह से TX2 प्रोग्राम इनका सक्सेसफुल रहा पीलीभीत टाइगर रिजर्व में. ओके. अब पीलीभीत टाइगर रिजर्व में हालत ये हो गई कि जैसे आज अभी मैं न्यूज देख रहा था कि जो टाइगर है बेसिकली वो आसपास के रेजिडेंशियल एरियाज में आ जा रहे हैं. तो जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, दे हैव रेज्ड पर्टिकुलर काइंड ऑफ एडवाइजरीज टू एवरीवन कि भाई टाइगर्स घूम रहे हैं, घर में रहना. अब इंसान भी बेचारा करे तो करे क्या, बताओ. बाहर जाए तो कोरोना का खतरा है, थोड़ा बहुत अब मास्क लगा के जाने की कोशिश कर रहा तो टाइगर का खतरा है. पैथेटिक कंडीशन. चलिए आगे मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आर नोन एज ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेज
which are used as number 1, pressurizing agent in aerosol cans, in the production of plastic foams, in cleaning certain electronic components, in the production of tubeless tires. Choose the correct code. Choose the correct code. Option A 1 and 2, option B 1, 2 and 3, option C 1, 3 and 4, and option D all of the above. Question number 5. Chlorofluorocarbon, which is also known as ozone depleting substance, are used number 1 as pressurizing agent in aerosol cans, number 2 in the production of plastic foams, number 3 in cleaning certain electronic components, and number 4 in the production of tubeless tires. Choose the correct code. Yes, Vishnu. Chlorofluorocarbon, CFC. Question number 6. Question number 5. देखो, इन द प्रोडक्शन ऑफ ट्यूबलेस टायर्स में CFC का यूज इज डाउटफुल. ठीक है, इन द प्रोडक्शन ऑफ ट्यूबलेस टायर्स इट इज डाउटफुल, बट प्रेशराइजिंग एजेंट्स इन एरोसोल कैन्स यूज होता है. इन द प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक फोम्स यूज होता है बिल्कुल. इन क्लीनिंग सर्टेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, हाँ जी बिल्कुल, यहां पे भी यूज होता है. तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी 1, 2 एंड 3. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. With reference to forest carbon partnership facility, which of the following statement is are correct? Number 1, it is a global partnership of governments, business, civil society and indigenous peoples. Second, it provides financial aid to universities, individual scientists and institutions involved in scientific forestry research to develop eco-friendly and climate adaptation technologies for sustainable forest management. Third, it assists the countries in their REDD, means reducing emission for deforestation and forest degradation effort, by providing them with financial and technical assistance. Choose the correct code. Choose the correct code. Option A 1 only, option B 2 and 3 only, option C 1 and 3 only, and option D 1, 2 and 3. Question number 6. Forest carbon partnership facility, which of the following statement is are correct? 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी से, मतलब यूपीएससी ने क्वेश्चन आपसे पूछा था, सॉरी. So it is a global partnership of government, business, civil society and indigenous people. It provides financial aid to universities, individual scientists and institutions involved in scientific forestry research to develop eco-friendly and climate adaptation technology for sustainable forest management. Okay, it assists the countries in their RED efforts by providing them with financial and technical assistance. देखो, सेकंड स्टेटमेंट जब आप पढ़ रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 6, सेकंड स्टेटमेंट जब आप पढ़ रहे होंगे तो आपको लगेगा हाँ भाई ऐसे ही कुछ करते होंगे ये, बट ऐसा कुछ नहीं करते हैं ये. ठीक है, एक सिंपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है. सो योर आंसर विल बी ऑप्शन सी 1 and 3. योर आंसर विल बी ऑप्शन सी 1 and 3 only. Okay. The Forest Carbon Partnership Facility is a global partnership of government, business, civil society and indigenous peoples focused on reducing emission from deforestation and forest degradation, forest carbon stock conservation, the sustainable management of forest and the enhancement of forest carbon stocks in developing countries. The activities are commonly referred as RED+. The FCPF works with 47 developing countries across Africa, Asia and Latin America and the Caribbean, along with 17 donors that have made contribution and commitment totaling around $1.3 billion. The FCPF supports RED+ efforts through its readiness and carbon funds. Okay. Question number 7. Consider the following statement with reference to food chain in ecosystem. A food chain in ecosystem. Food chain पढ़ी है? Food chain, food web, ये तो पढ़ा ही होगा. तो consider the following statement with reference to food chains in ecosystem. Number 1, food chains are found within the population of a species. Second, a food chain illustrates the order in which a chain of organisms feed upon each other. Third, a food chain illustrates the number of each organism which are eaten by others. Choose the correct code. Choose the correct code.
Yes, food chains are found within the population of a species. Second, a food chain illustrates the order in which a chain of organisms feed upon each other. Third, a food chain illustrates the number of each organisms which are eaten by others. तो देखो फूड चेन कुछ नहीं है, एक सिंपल सी चीज है कि भाई एक हायरार्की कह लो, एक सीक्वेंस कह लीजिए कि सबसे पहले क्या होगा, ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स होंगे यानी कि ऑटोट्रॉफ्स होंगे, यानी कि जो अपना फूड डायरेक्ट सनरेज से बनाते हैं, यानी कि प्लांट्स की बात कर रहे हैं, दीज आर ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, अब ये जो प्लांट्स होंगे, इन प्लांट्स को खाने के लिए कोई हर्बीवोर आ जाएगा। ठीक है, इनको खाने के लिए कोई हर्बीवोर आ गया, लेट्स से फॉर एग्जांपल रैबिट आ गया। ओके, अब रैबिट को सपोज करो फॉक्स ने खा लिया, फॉक्स को सपोज करो वॉल्फ ने खा लिया, और वॉल्फ को सपोज करो टाइगर ने खा लिया। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि टाइगर को कौन खाएगा? भाई टाइगर को कोई नहीं खाएगा, ठीक है ना, टाइगर को कोई नहीं खाएगा, टाइगर नेचुरली मर जाएगा आगे चल के, जब भी वो मरेगा तो इसकी बॉडी जो है डिकम्पोज होगी और इस पे जो है डिकम्पोजर्स काम करेंगे। सो दिस इज हाउ द फूड चेन वर्क्स। ठीक है, दिस इज हाउ द फूड चेन वर्क्स। सो इट इज फाउंड विद इन द पॉपुलेशन ऑफ अ स्पीशीज, इट इज नॉट नेसेसरी, अलग अलग स्पीशीज में मिलती है ये। देन अ फूड चेन इलस्ट्रेट्स द ऑर्डर इन विच अ चेन ऑफ ऑर्गेनिजम्स फीड अपॉन ईच अदर, ये बिल्कुल सही बात है, ऑर्डर ऑफ चेन है ये। अ फूड चेन इलस्ट्रेट्स द नंबर ऑफ ईच ऑर्गेनिज्म व्हिच आर ईटन बाय अदर्स, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म से कुछ मतलब नहीं है, अब एक रैबिट खाए या 4 रैबिट खाए वो एक अलग चीज होती है। सो सेकंड थर्ड स्टेटमेंट भी गलत है, फर्स्ट स्टेटमेंट भी गलत है, योर आंसर विल बी ऑप्शन बी, 2 ओनली। ओके, all food chains start with energy from the sun. This energy is captured by plants. Thus, the living part of a food chain always start with plant life and ends with an animal. Plants are called producers because they are able to use light energy from the sun to produce food from carbon dioxide and water. Right? Question number 8 पे आते हैं। Biocarbon Fund Initiative for Sustainable Forest Landscape is managed by the Biocarbon Fund Initiative for Sustainable Forest Landscape is managed by the option A, Asian Development Bank, option B, International Monetary Fund, option C, United Nations Environment Program, and option D, World Bank. Yes, Biocarbon Fund Initiative कौन मैनेज करता है? Biocarbon Fund Initiative for sustainable forest landscape is managed by, yes, जल्दी बताइए आंसर गाइस। So देखो, this particular fund is managed by World Bank. This particular fund is managed by World Bank. Okay. So the Biocarbon Fund Initiative for Sustainable Forest Landscape is a multilateral facility that promotes and rewards reduced greenhouse gas emission and increased sequestration through better land management, including RED+, climate smart agriculture, and smarter land use planning and policies. What do you understand by this term climate smart agriculture? Yes, Vishnu, Manila, बाकी लोग कौन है ऑनलाइन? So what do you understand by climate smart agriculture? What do you understand by climate smart agriculture? What do you understand by climate smart agriculture? चलिए बताइए पहले, फिर मैं रिप्लाई करता हूँ इसमें। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर? नंबर 1 नॉस्टक, नंबर 2 एग्रीकस, एंड नंबर 3 स्पाइरोगायरा। चूज द करेक्ट कोड, चूज द करेक्ट कोड। ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी 3 ओनली, एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। Yes guys, please answer this question.
Yes, please answer this question. Which of the following is used as biofertilizer? Number 1, Nostec. Number 2, Agaricus. Number 3, Spirogyra. Choose the correct code. Option A, 1 only. Option B, 2 only. Option C, 3 only. And option D, all of the above. Yes, question number 9. So guys, इसका आंसर है ऑप्शन ए, 1 only. Nostec is basically a biofertilizer. Okay, like most blue-green algae, Nostoc contains two pigments, blue phycocyanin and red phycocyathrin, as well as chlorophyll, and has the ability to fix nitrogen in specialized cells called heterocysts. A terrestrial species has been used as a supplementary food source in Asia. देखो, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर का मतलब होता है कि जब हम ऐसे एग्रीकल्चर एक्टिविटी कर रहे हैं जो बेसिकली क्लाइमेटिक चेंज से इंसुलेट कर देती है हमें, यानी कि पता चला कि किसान ने सोचा कि बारिश अच्छी होगी और उसने चावल ग्रो कर दिए, पता चला बारिश अच्छी नहीं हुई, उसकी क्रॉप फेलियर हो गया, तो वो नहीं है क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर मतलब होगा कि जब बेसिकली क्लाइमेट के अकॉर्डिंग या क्लाइमेट के किसी भी फैक्टर की वजह से क्रॉप फेलियर नहीं हो रहा है, तो यानी कि फार्मर पहले माइंड में मेकअप करके चल रहा है कि भाई ठीक है कि हमें किस तरीके से ऐसी चैलेंजेस को डील करना है। तो दिस इज कॉल्ड क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, राइट? दिस इज कॉल्ड क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। और ये जो है बेसिकली नॉस्टक, ये ब्लू ग्रीन एल्गे है और इसके दो पिगमेंट्स होते हैं, ब्लू कलर का और रेड कलर का, और ये बेसिकली सॉइल में नाइट्रोजन फिक्सेशन के हेल्प करता है। ओके, यस विष्णु, एनी डाउट? क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। गाडगिल कमिटी रिपोर्ट एंड कस्तूरी रंगन कमिटी रिपोर्ट sometime seen in news are related to। अब ये गाडगिल कमेटी रिपोर्ट और कस्तूरी रंगन कमेटी रिपोर्ट अगर आप हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो डेफिनेटली आपको ये दोनों नाम कई बार आपने पढ़े होंगे, गाडगिल कमेटी और कस्तूरी रंगन कमेटी रिपोर्ट। यस, प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन। ये आप आसानी से कर सकते हो। थोड़ा सा ब्रेन पे मतलब प्रेशर डालो, थोड़ा सा ब्रेन पे जोर डालना पड़ेगा सोचने के लिए कि भाई कहाँ पढ़ा है, कब पढ़ा था। यस, जल्दी। अच्छा, आज सब गलत हो रहे हैं, कोई बात नहीं विष्णु, अभी जितने क्वेश्चन गलत कर सकते हो कर लो। ये मान के चलो कि अगर 40 क्वेश्चन गलत किए ना तो 40 क्वेश्चन तुमने वो श्योर शॉट अपने कर लिए कमांड उस पर। यानी गलती अगर एक जेन्युइन पर्सन की निशानी क्या होती है कि अपनी गलती कभी नहीं भूलता है। तो 40 क्वेश्चन अगर तुमने गलत करे यहाँ पे, अभी मैं ये नहीं कह रहा एग्जाम में गलत करके आ जाना, फिर तो जिंदगी भर याद रखोगे। मैं अभी की बात कर रहा हूँ कि अभी कोई क्वेश्चन गलत कर रहे हो तो उसको लेके बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, ये आपके कॉन्सेप्ट्स को और ज़्यादा पॉलिशी कर रहा है, राइट? क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। यस, बताइए। अच्छा, मनीला इज राइटिंग गंगा एक्शन प्लान। क्वेश्चन नंबर 10, देखो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है ऑप्शन डी, प्रोटेक्शन ऑफ वेस्टर्न घाट्स। इको सेंसिटिव जोन्स बनाने के लिए लोगों ने बात की थी। ओके, गार्डियल कमेटी बनी थी, गार्डियल कमेटी की रिपोर्ट को स्टडी करने के लिए एक दूसरी कमेटी बनाई गई, कस्तूरी रंगन कमेटी, जो इसकी रिपोर्ट को स्टडी करेगी। सो इन्होंने बेसिकली ये बोला है कि भाई जो नेशनल पार्क या जो ऐसे जोन्स हैं इस तरह के नेशनल हेरिटेज वाले, इनके लगभग 10 किलोमीटर या 20 किलोमीटर के आसपास तक क्या है, इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर देना चाहिए एरिया को, सो डैट कोई भी किसी भी तरह का एक्सप्लॉयटेशन एनक्रोचमेंट इन एरियाज में ना हो पाए, राइट? तो वेस्टर्न घाट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बेसिकली ये कमेटी बनाई गई थी, एंड प्रोटेक्शन ऑफ वेस्टर्न घाट्स इज द आंसर। So the Western Ghats Ecology Expert Panel, also known as the Gadgil Commission, after its chairman named Madhav Gadgil, was an environmental research commission appointed by the Ministry of Environment and Forest of India. Okay. Question number 11 पे आते हैं। Consider the following statements with reference to eco-sensitive zone. Number 1, eco-sensitive zones or ecologically fragile areas are areas with 10 kilometers around protected areas, national parks and wildlife sanctuaries. Number 2, they are notified by MOEF-CC, Government of India, under Environment Protection Act 1986. Choose the correct code. Choose the correct code. Option A 1 only, option B 2 only, option C both 1 and 2, and option D neither 1 nor 2. Yes, good afternoon Ankita. Please answer this question. ये तो मैंने अभी आपको क्वेश्चन बता ही दिया पिछले आंसर में ही, आप इसको तो आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को आराम से अटेम्प्ट किया जा सकता है, अभी जस्ट मैंने आपको समझाया ये।
Yes, please answer this question number 11. Number 1, eco-sensitive zones or ecologically fragile areas are areas within 10 kilometers around protected areas, national parks and wildlife sanctuary. Then they are notified by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India under Environment Protection Act 1986. Choose the correct code. Option A 1 only, option B 2 only, option C both 1 and 2, and option D neither 1 nor 2. So इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी. यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2. So recently the Ministry of Environment, Forest and Climate Change has issued a new draft notification for reducing the eco-sensitive zone of Banerghatta National Park, Bengaluru in Karnataka. So Banerghatta National Park कहाँ पर located? It is in Bengaluru in Karnataka. ये भी ध्यान रखना. Question number 12 पे आते हैं जल्दी से. Consider the following. Dampa Tiger Reserve is in Mizoram. Gumti Wildlife Sanctuary is in Assam. Saramati Peak is in Nagaland. Choose the correct code. यानी कौन सा करेक्टली मैच्ड है, करेक्ट पेयर. ऑप्शन ए 1 and 2, ऑप्शन बी 2 and 3, and ऑप्शन सी 1 and 3, and ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव. प्लीज आंसर दिस. यस, क्वेश्चन नंबर 12. गाइस, क्वेश्चन नंबर 12 में डंपा टाइगर रिजर्व इज इन मिजोरम and Saramati Peak is in Nagaland. Gumti Wildlife Sanctuary, Assam. You have to check this. So answer will be option C 1 and 3. Answer is option C 1 and 3. So Gumti Wildlife Sanctuary is located in Sikkim, not in Assam. So the answer will be C 1 and 3 only. Next question में move करते हैं. Question number 13. Consider the following statements regarding brominated flame retardants which are used in many household products like mattresses and upholstery. They are able to accumulate in humans and animals. They are highly resistant to degradation in the environment. Choose the incorrect code. Choose the incorrect code. Option A 1 only, option B 2 only, option C both 1 and 2, and option D neither 1 nor 2. Yes, question number 13 का आंसर बताइए guys. Consider the following statement regarding brominated flame retardants which are used in many household products like mattresses and upholstery. They are able to accumulate in humans and animals. They are highly resistant to degradation in the environment. तो incorrect code पूछा गया, but दोनों ही correct है. So your answer will be option D, neither 1 nor 2. Very good Manila. Finally तुम्हारा क्वेश्चन सही हो गया एक. So क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं. Consider the following statement in respect to trade related analysis of fauna and flora in commerce. जिसको short form दिया गया traffic. It was asked in 2017. Traffic is a bureau under the United Nations Environment Program. First statement. Second one is the mission of traffic is to ensure that trade in wild plants and animals is not a threat to the conservation of nature. So choose the correct code. Choose the correct code. Option A 1 only, option B 2 only, option C both 1 and 2, and option D neither 1 nor 2. Question number 14 का आंसर करिए guys. So it is not under UNEP. First one is the incorrect one. First one is the incorrect one. It is not under UNEP. The mission of traffic is to ensure that trade in wild plants and animals is not a threat to the conservation of nature. This is absolutely correct. So your answer will be option B 2 only. Okay, it is an NGO, not a bureau under UNEP. So first is wrong. Traffic is governed by the Traffic Committee, a steering group composed of members of Traffic Partner Organization, WWF and IUCN. Question number 15 पे आते हैं. National Tiger Conservation Authority is a statutory body. Then next, second one है, the National Ganga River Basin Authority is chaired by the Prime Minister. So choose the correct code. Choose the correct code. Question number 15. So guys, this is absolutely factual question. So दोनों ही statements यहाँ पे correct है. So your answer will be option C both 1 and 2. Your answer will be option C both 1 and 2. Question number 16 पे आते हैं. Consider the following statement about National Ganga River Basin Authority. Number 1. The mission of the organization
is to safeguard the drainage basin which feeds water into the Ganga by protecting it from pollution or overuse. Second, National Ganga River Basin Authority has been transferred from Ministry of Environment and Forest to the Ministry of Water Resources. Choose the correct code. Yes, choose the correct code. Question number 16. Question number 16. Yes. देखो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट भी करेक्ट है एंड सेकंड भी करेक्ट है. सो योर आंसर विल बी ऑप्शन सी बोथ 1 and 2. योर आंसर विल बी ऑप्शन सी बोथ 1 and 2. वेरी गुड विष्णु. अंकिता, इसका आंसर ऑप्शन सी होगा. दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है यहाँ पे. So National Ganga River Basin Authority is a financing, planning, implementing, monitoring and coordinating authority for the Ganga River, functioning under the Water Resource Ministry of India. Question number 17 पे आते हैं. Consider the following statement about neem coated urea. यूरिया पे जो नीम कोटिंग हो रही है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है. नंबर 1, this scheme is initiated to regulate use of urea, enhance availability of nitrogen to the crop and reduce cost of fertilizer application. Second, it reduces the cost of cultivation and improves soil health management. तो choose the incorrect code पूछा है यहाँ पर. They asked you choose the incorrect code. Option A 1 only, option B 2 only, option C both 1 and 2 and option D neither 1 nor 2. Question number 17. तो यूरिया एज अ फर्टिलाइजर यूज होता है. ठीक है, यूरिया जो है बेसिकली इट इज यूज्ड एज फर्टिलाइजर. अब इसमें एक चीज होती है कि यूरिया की ना, क्योंकि किसानों को जो यूरिया दिया जाता है काफी ज्यादा सब्सिडाइज्ड प्राइस पे दिया जाता था. ठीक है, किसानों को जो यूरिया दिया जाता था काफी सब्सिडाइज्ड प्राइस पे दिया जाता था. तो ऐसी कंडीशन में क्या होता था बेसिकली कि इस यूरिया की चोरी की जाती थी और फिर ये इंडस्ट्रीज को बेचा जाता था. ठीक है, तो सरकार ने फार्मर के लिए यूरिया भेजा तो पता चला उसको यूरिया मिल ही नहीं रहा. क्यों? क्योंकि ये सारा यूरिया जो है बेसिकली क्या चला जा रहा है, इंडस्ट्रीज में चला जा रहा है. अब क्या करा है सरकार ने कि यूरिया की नीम कोटिंग करी, यानी कि नीम का लेयर जो है पूरे यूरिया के आसपास लगा दिया जाता है. तो ऐसे में क्या होता है कि जब इसको हम सॉइल में डालते हैं तो एक तो सॉइल में वो लंबे टाइम तक यूरिया सस्टेन्ड रहता है. ओके, सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन रहती है, सॉइल का इकोलॉजिकल सेटअप मेंटेन रहता है, इकोलॉजिकल बैलेंस. और दूसरी बात क्या कि अगर इस ऐसे नीम कोटेड यूरिया को इंडस्ट्री वालों ने चुरा भी लिया तो उसको नीम को और यूरिया को ही सेपरेट करने में ही उनकी अच्छी खासी जो है बेसिकली इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, एक्सपेंसिव आ जाएगा बेसिकली. तो इसलिए नीम कोटेड यूरिया से बहुत सारी इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हुई है. तो चूज द इनकरेक्ट कोड पूछा गया क्वेश्चन नंबर 17 में. तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है. सो आंसर होगा ऑप्शन डी, नाइदर 1 nor 2. ओके, क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग एड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर? नंबर 1 फोटोसिंथेसिस, नंबर 2 डीके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, नंबर 3 रेस्पिरेशन and number 4 volcanic action. Choose the correct code. Option A 1, 2 and 3, option B 2, 3 and 4, option C 1, 3 and 4 and option D all of the above. Please answer this question. कार्बन डाइऑक्साइड इनमें से किस प्रोसेस के थ्रू जो है एटमॉस्फेयर में और ज्यादा एडअप होता है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से, डीके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर से, रेस्पिरेशन से या फिर वॉल्केनिक एक्शन से? क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर यस. सो देखो, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को हम इसमें कंसीडर नहीं करेंगे कि दैट इट इज एडिंग कार्बन डाइऑक्साइड. वो तो एक नॉर्मल मैकेनिज्म ही है. लेकिन डीके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, रेस्पिरेशन, वॉल्केनिक एक्शन, दे फर्दर एड अप्स टू द कार्बन डाइऑक्साइड. सो द आंसर विल बी ऑप्शन बी 2, 3 and 4. प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. ओके, प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर अगस्थ्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व? विच ऑफ द फॉलोइंग आर लोकेटेड इन अगस्थ्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व? सो अगस्थ्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व है, उसमें इनमें से कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज या नेशनल पार्क लोकेटेड है या रिजर्व लोकेटेड है? ऑप्शन ए नेयार, पेपरा एंड शेंडुने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड कालाकाड़ मुंडन थुरई टाइगर रिजर्व. 10 Mudumalai, Satyamanglam and Wayanad wildlife sanctuaries
and Silent Valley National Park. Then comes Kondilia, Gundala, Rameshwaram and Papikonda Wildlife Sanctuary and Mukurthi National Park. Then comes Kaval and Sri Venkateshwara Wildlife Sanctuary and Nagarjun Sagar Sri Selam Tiger Reserve. So question number 19 का जो आपको आंसर देना है that is option A. It is the correct answer, option A. Okay. Agastyalamala Biosphere Reserve consists of Neyar, Pepra and Shendune Wildlife Sanctuary and their adjoining areas. Okay. Question number 20 पे आते हैं. Consider the following pair, wildlife and naturally found in. Number 1, bluefin mashir. तो कावेरी रिवर लिखा है. Then comes the Irrawaddy dolphin. चंबल रिवर लिखा है. Rusty spotted cat. तो it is लिखा है, ईस्टर्न घाट्स लिखा है. अब what you can do, which one of the following pair given above is are correctly matched. अब यहाँ लिखा है इरावडी डॉल्फिन, यानी इरावडी रिवर होती है और यहाँ चंबल रिवर, तो दोनों को मैच ही नहीं है, इसलिए ये पेयर को हम इनकरेक्टली मान लेंगे. ठीक है. इरावडी बांग्लादेश की तरफ से जाने वाली रिवर है और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी काफी ज्यादा पॉपुलर है. तो इरावडी डॉल्फिन बेसिकली कोस्टल एरिया में डॉल्फिन मिलेगी और चंबल रिवर जो है बेसिकली चंबल रिवर इससे रिलेटेड नहीं है. रस्टी स्पॉटेड कैट, इट इज ईस्टर्न घाट्स. which one of the pair given above is are correctly matched? Option A 1 and 2, option B 2 and 3, option C 1 and 3 and option D 1, 2 and 3. Yes, question number 20 का आंसर बताइए guys. Okay, very good. वेरी गुड. क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है ऑप्शन सी 1 and 3. तो इरावडी डॉल्फिन को आप एलिमिनेट कर दीजिए यहां से. गंगेटिक रिवर डॉल्फिन जिसको प्लाटानिस्टा गैंगेटिका इज फाउंड इन चंबल रिवर बोला जाता है. इरावडी डॉल्फिन इज अ डिफरेंट स्पीशीज. इट इज फाउंड इन चिल्का लेगून एंड सॉल्ट वाटर एस्चुरीज ऑफ ओडिशा. ओके. क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. नंबर 1, द कूल टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन climate is an intermediate type of climate between the British and the Siberian type of climate. Number 2, it has features of both the maritime and the continental climate. Number 3, Laurentian type of climate is found in northeastern North America, including eastern Canada. Yes. Choose the correct code. Option A 1 only, option B 2 and 3 only, option C all of the above, and option D none of the above. Yes guys, please answer this question. So question number 21, consider the following statement. Number 1, the cool temperate eastern margin climate is an intermediate type of climate between the British and the Siberian type of climate. Number 2, it has features of both the maritime and the continental climate. Number 3, Laurentian type of climate is found northeastern North America, including eastern Canada. Choose the correct code. Option A 1 only, option B 2 and 3 only, option C all of the above, and option D none of the above. Question number 21. Yes. So question number 21 में तीनों ही statements correct हैं. All three statements that number 1, the cool temperate eastern margin climate is an intermediate type of climate between the British and the Siberian type of climate. It is absolutely correct. Then second one is it has features of both the maritime and the continental climate. ये इसकी unique feature है. And the third one is that Laurentian type of climate is found in northeastern North America, including eastern Canada. All three statements are correct. So your answer will be option C, all of the above. Laurentian type of climate is found in only two regions. One in northeastern North America, including eastern Canada. Northeast USA, that is maritime provinces and the New England states and Newfoundland. This may be referred as the North American region. The other region is the eastern coastline of Asia, including eastern Siberia, North China, Manchuria, Korea and northern Japan. It may be referred as the Asiatic region. Next question पे आते हैं जल्दी से guys. So ये जो region आप देख रहे हैं, this is the
This is the particular region we are talking about, Laurentian type. Question number 22 पे आते हैं. Consider the following statement. In the southern hemisphere, Laurentian climatic type is absent because of only a small section of the southern continent extends south of the latitude of 40 degrees south. Second, in the southern hemisphere, the climate is so equable and the oceanic influence is so profound that neither the continental nor the eastern margin type of climate exists. Choose the correct code. Option A 1 only, option B 2 only, option C both 1 and 2, and option D neither 1 nor 2. Yes, question number 22. सो गाइस यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं. ये इन द सदर्न हेमिस्फीयर लोरेशियन क्लाइमेट इज एब्सेंट, क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर में लैंड पार्ट कंपैरेटिवली काफी कम है और जो लैंड पार्ट एक्सटेंड भी हो रहे हैं वो काफी नैरो है, तो बेसिकली इट इज एब्सेंट देयर. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट. सेकंड, इन द सदर्न हेमिस्फीयर द क्लाइमेट इज सो इक्वेबल एंड द ओशियनिक इन्फ्लुएंस इज सो प्रोफाउंड that neither the continental nor the eastern margin type of climate exists. Both of the statements are correct, so your answer will be option C, both 1 and 2. Next question पे आते हैं. The only possible location in its is in eastern Patagonia, south of Bahia Blanca to Terra del Fuego, but the climatic barrier of the southern Andes is so complete that the westerlies hardly ever reach Patagonia. The region is subjected to aridity rather than continentality. Its annual precipitation is not more than 10 inches, so that it is a rain shadow desert. Next आगे मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं. Consider the following statements. Number 1, the Laurentian type of climate has cold, wet winters and warm, dry summer. Second, summers are as warm as the tropic, that is 70 degree to 80 degree Fahrenheit. Choose the correct code. Option A 1 only, option B 2 only, option C both 1 and 2, and option D neither 1 nor 2. Yes, question number 23. So question number 23 में सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है कि समर्स आर वार्म एज द ट्रॉपिक्स, तो इसका टेम्परेचर दैट इज अराउंड 70 डिग्री टू 80 डिग्री फ़ारेनहाइट. सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट. फर्स्ट वन इज इनकरेक्ट, सो योर आंसर विल बी ऑप्शन बी. अब फर्स्ट स्टेटमेंट क्यों इनकरेक्ट है कि लॉरेशियन टाइप ऑफ क्लाइमेट हैज कोल्ड ड्राई विंटर्स. ओके, कोल्ड ड्राई विंटर्स, यहाँ पे लिखा है वेट विंटर, तो इस वेट विंटर की वजह से ये गलत हो जाता है. यहाँ विंटर में बारिश नहीं होती है, विंटर्स ड्राई रहती हैं. तो कोल्ड ड्राई विंटर्स एंड वार्म wet summers. Winter temperature may be well below freezing point and snow falls to quite a depth. Summers are as warm as the tropic, and if it were not for the cooling effect of the offshore cold current from the Arctic, the summer might be even hotter. Next question में मूव करते हैं. Question number 24 पे आते हैं. Consider the following statements. Consider the following statements. Number 1, winter is dry and cold because the winds are dry westerlies that blow out from the continental interior. Second, the most remarkable characteristic of the Laurentian climate of the North American region is कि मतलब यहाँ पे जो रेन है that is 3 to 4 inches monthly with a late summer maximum. Third, an annual precipitation of 41 inches with the wettest month in July and August. यहाँ पे पूछा गया incorrect code. Choose the incorrect code. Option A 1 and 2, option B 2 only, option C all of the above, and option D none of the above. Question number 24. So guys, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी none of the above. इसका आंसर होगा ऑप्शन डी none of the above. नेक्स्ट आगे मूव करते हैं. No month is really dry and the driest month November has 2.5 inches of rain. This uniformity of precipitation is largely due to the Atlantic influence and that of the Great Lakes. आगे मूव करते हैं. Yes. Question number 25. Consider the following statement. The warm Gulf Stream increases the moisture content of easterly winds from the open Atlantic. Second, the prevailing westerlies which penetrate across the Rockies carry depression over the Great Lakes to the New England states. Choose the incorrect code. Choose the incorrect code. Option A 1 only, option B 2 only, option C both 1 and 2, and option D neither 1 nor 2. Question number 25.
यस। सो यहाँ पे क्या है कि दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। ओके, दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। सो योर आंसर विल बी ऑप्शन डी, क्योंकि पूछा गया है इनकरेक्ट कोड, तो दोनों में से कोई भी इनकरेक्ट नहीं है। सो आंसर विल बी नाइदर वन नॉट टू। So these winds does promote wet conditions, especially in winter, which are vital for the agricultural activities of northeastern North America. Then comes next question, question number 26. Consider the following statement. Number one, the meeting of the warm Gulf Stream and the cold Labrador Current on coastal waters of Newfoundland produces dense mist and fog and gives rise to much precipitation. Second, Newfoundland experiences more drizzle than an other part of the world. Choose the correct code. Choose the correct code. Question number 26. Guys, दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट भी करेक्ट है and the second statement is also correct. So your answer will be option C, both 1 and 2. Next आगे मूव करते हैं। Question number 27 पर है, consider the following statements. Winters are cold and very dry, while summers are very warm and exceptionally wet in the Asiatic region. Second, the mountainous interior of China has such profound continental effect that the intense heating in summer creates a region of extreme low pressure and moisture-laden winds from the Pacific Ocean and the Sea of Japan blow in as the southeast monsoon. Choose the correct code. Option A 1 only, option B 2 only, option C both 1 and 2, and option D neither 1 nor 2. Yes. Give the answer. Question number 27. सो गाइस देखो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। सो योर आंसर विल बी ऑप्शन सी बोथ 1 and 2. योर आंसर विल बी ऑप्शन सी बोथ 1 and 2. The Laurentian type of climate here is often described as the cool temperate monsoon climate. It has a very long cold winter and a big annual range of temperature. The July mean for peaking is 79 degree Fahrenheit, while that of January is only 24 degree Fahrenheit. Next question पे आते हैं जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 28. Consider the following statements. Number one, the climate of Japan is modified by its insularity and also by the meeting of warm and cold ocean currents. Number two, it receives adequate rainfall from both the southeast monsoon in winter and the northwest monsoon in summer. Third, the warm Kuroshio has played an important part in making the climate of Japan less extreme. Choose the incorrect code. Choose the incorrect code. Option A 1 and 2, option B 2 only, option C 2 and 3, and option D 3 only. Yes. क्यूरोशियो करंट, ओयाशियो करंट्स, ये हमने डिस्कस किया था। इनफैक्ट मैंने आज ही ओशनोग्राफी खत्म भी किया है इस पे ऐप पे, अनअकैडमी ऐप पे, तो आपने उसमें भी देखा होगा, इसको हमने डिस्कस किया था वहां पर। क्वेश्चन नंबर 28, इनकरेक्ट कोड पूछा गया है, तो यहाँ पे हम देखते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट को। द क्लाइमेट ऑफ जापान इज मॉडिफाइड बाय इट्स इंसुलरिटी एंड ऑल्सो बाय द मीटिंग ऑफ वार्म एंड कोल्ड ओशन करंट. दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट. सेकेंड, it receives adequate rainfall from both the southeast monsoon in winter and the northwest monsoon in summer. So this is basically incorrect statement. Okay, ये incorrect है यहाँ पर. Third, the warm Kuroshio has played an important part in making the climate of Japan less extreme. Choose the incorrect code पूछा गया है, तो your answer will be option B 2 only. It receives adequate rainfall from both the southeast monsoon in summer and the northwest monsoon in summer winter. तो ये बेसिकली रिवर्स कर दिया गया था यहाँ पर. ओके, सो क्यूरोशियो काउंटर करंट और ये पूरा इस मैप को एक बार जरा अच्छे से जरूर देख लेना. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके विष्णु, सॉरी. क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. नंबर वन, the predominant vegetation of the Laurentian type of climate is cool temperate forest. Second, the heavy rainfall, the warm summer and the damp air from fogs all favor the growth of trees. Choose the correct code. Choose the correct code. Option A 1 only, option B 2 only, option C both 1 and 2, and option D neither 1 nor 2.
Please answer this question. Yes, question number 29 का आंसर बताइए जल्दी. Question number 29. तो दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है यहाँ पे. फर्स्ट स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट. द प्रीडोमिनेंट वेजिटेशन ऑफ द Laurentian type of climate is cool temperate forest, and the second, the heavy rainfall, the warm summer, and the damp air forms fogs forms fog all favors the growth of trees. तो choose the correct code. तो दोनों सही है यहाँ पर. स्टेटमेंट सी विल बी द आंसर. ऑप्शन सी विल बी योर आंसर. So the forests tend to be coniferous north of the 50-degree north parallel of latitude. The increase in the length and the severity of the winter excludes forests that are not adaptable to cold conditions. Question number 30 पे आते हैं. Consider the following statement. Number 1. Lumbering has always been a major occupation of this sparsely populated part of Eastern Asia, and timber is a leading export item. Second, Western Canada along the bank of St. Lawrence River is the heart of the Canadian timber and wood pulp industry. Choose the correct code. Choose the correct code. Option A 1 only, option B 2 only, option C both 1 and 2, and option D neither 1 nor 2. Yes, please answer this question. Yes, Vishnu, answer करिए क्वेश्चन का. क्वेश्चन नंबर 30. देखो, first statement, lumbering has always been a major occupation of this sparsely populated part of Eastern Asia. Sorry. And timber is a leading export item. This is the correct one. ये statement correct है. Second में लिखा है Western Canada. तो you have to check this out entire statement. And this statement is absolutely incorrect. So your answer will be option A 1 only. So basically Eastern Canada है, not Western Canada. So Eastern Canada along the bank of St. Lawrence River is the heart of the Canadian timber and wood pulp industry. Next, question number 31 पे आते हैं. Consider the following statement. Number 1, lumbering and its associated timber, paper and pulp industries are the most important economic undertaking. Second, agriculture is less important in view of the severity of the winter and its long duration. Choose the correct code. Option A 1 only, option B 2 only, option C both 1 and 2, and option D neither 1 nor 2. Question number 31. देखो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं. Both of the statements are correct. So your answer will be option C both 1 and 2. Your answer will be option C both 1 and 2. So fortunately, the maritime influence and the heavy rainfall enable some hardy crops to be raised for local needs. Potatoes thrive over large areas of the podzolized soil, while hardy cereals like oats and barley can be sown and successfully harvested before the onset of the cold winter. Question number 32 पे आते हैं. Consider the following statement. Number 1, Northern China, Manchuria and Korea are amongst the world's leading producer of soybean. Second, in the North America region, arable farming is not carried out on a sizable scale except in the more favorable localities. Third, the fertile Annapolis Valley in Nova Scotia is the world's most renowned region for apples. Choose the correct code. Choose the correct code. Yes. Question number 32. Yes, Vishnu, answer. देखो क्वेश्चन नंबर 32 में
तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं. Okay, all three statements are correct. So your answer will be option D. Your answer will be option D. All three statements are correct. Right? Question number 33 पे आते हैं. Consider the following statement. Number 1. The world's largest fishing ground is particularly on the Grand Banks of Newfoundland. Second, fish feed on minute marine organisms, collectively called planktons, which is present in abundance. Choose the correct code. Option A 1 only, option B 2 only, option C both 1 and 2, and option D neither 1 nor 2. Yes, question number 33. So guys, question number 33 का आंसर है option C both 1 and 2. This is the correct answer, both 1 and 2. So question number 34 पे आते हैं. Consider the following statements. Number 1. In the Northwest Pacific surrounding the islands of Japan is another major fishing area of the world. Second, Japan is one of the few countries that has taken to seaweed cultivation. Third, pearl culture is also another interesting aspect of Japanese fishing. Choose the correct code. Choose the correct code. Option A 1 only, option B 2 and 3 only, option C all of the above, and option D none of the above. Question number 34. Yes, Vishnu, answer. Anji Vishnu, what's your answer? यस, क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर है ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव. इसका आंसर ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव. सो the divers of southern Japan dive down into the coastal waters and bring to the surface shellfish called pearl oysters and extract the highly prized pearl for sale as ornaments. The lining of the oyster shells called mother of pearl is used for the manufacture of pearl buttons and other decorative articles. As natural pearl in oysters are difficult to obtain in large number, the Japanese have begun to breed the young oysters by injecting tiny seeds into them. The oysters are made to secrete the pearl material, which accumulates to form cultured pearls, and these are collected and then exported. तो oysters में basically shell होता है, उसमें अंदर जो मोती मिलता है, राइट, उसमें अंदर मोती मिलता है, और मोती के कैल्शियम ही होता है बेसिकली, जो ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं इनकी बॉडी से बनता है वो ये, ठीक है. लेकिन क्या है कि अब ये क्योंकि डेकोरेटिव इंडस्ट्री में और हर जगह इतना ज़्यादा मोती अब यूज़ होता है, तो कितना जल्दी वो बेचारा प्रोड्यूस कर पाएगा. तो अब ये आर्टिफिशियली उसको प्रोड्यूस करते हैं कि इन ऑयस्टर्स में वो सीड्स को इंजेक्ट कर देते हैं, और फिर बाद में मोती जो है वो इंजेक्ट करता है, तो सिक्रीट करता है मोती को, उन पल्स को, और उनको फिर वो बाहर वो एक्सपोर्ट कर देते हैं. अगर आप मान लो जाओगे ना जितने भी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में, वहाँ पे आपको आपके सामने ही वो फ्रेश मोती, एकदम ओरिजिनल मोती कैसे निकाल के देंगे कि वो ऑयस्टर जो फिश होती है, मतलब शेल में होता है वो फिश पूरा, उसको आपके सामने पूरा खोलेंगे, उसके फ्लैश को काटेंगे, उसमें से मोती निकालेंगे और आपको फ्रेश एक जो है मोती निकाल के दे देंगे. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. एज अ नेशन, जापान अकाउंट्स फॉर 6 out of world's total annual fish caught. Second, Japan is the world's greatest fishing nation. Third, the continental shelves around the island of Japan are rich in plankton due to the meeting of the warm Kuroshio and the cold Oyashio currents and provide excellent breeding ground for all kinds of fish. ये चीज मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको बताया था कोल्ड लैब्राडोर करंट एंड गल्फ स्ट्रीम, इन दोनों का मैंने आपको एग्जांपल दिया था, राइट. सो वहां पे भी इस चीज को मैंने आपको बताया था, राइट. यस, क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर विष्णु. चूज द इनकरेक्ट कोड. चूज द इनकरेक्ट कोड. क्वेश्चन नंबर 35. सो देखो तीनों स्टेटमेंट्स यहां पे करेक्ट है, ऑल 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. सो योर आंसर विल बी ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 36. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. व्हेन विंड्स आर स्लाइड, waves do little damage to the shoreline and helps to build up the beaches and other depositional features. Second, it is in storms that the ravages of the waves reach their greatest magnitude.
Choose the correct code. Option A 1 only, option B 2 only, option C both 1 and 2, and option D neither 1 nor 2. Yes, please answer this question, guys. Question number 36. तो देखो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं. बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सो योर आंसर विल बी ऑप्शन सी बोथ 1 and 2. Your answer will be option C both 1 and 2. The coastline under the constant action of the waves, tides and current is undergoing changes from day to day. During storms, the pressure exerted by Atlantic wave is more than 600 lbs. Movement of such intensity will wear down not only the cliff but also sea walls and buildings. So बहुत हाई इंटेंसिटी का स्टॉर्म्स ये आते हैं और ये बेसिकली सी की वॉल हो, सी वॉल हो, बिल्डिंग्स हो या क्लिफ हो, सबको जो है डिस्ट्रॉय कर देते हैं, सबको तोड़ देते हैं. Consider the following statement. Number one, tides affect marine erosion mainly by extending a line of erosion into a zone of erosion. Second, currents helps to move eroded debris and deposit it as silt, sand and gravel along the coast. Choose the correct code. Choose the correct code. Option A 1 only, option B 2 only, option C both 1 and 2, and option D neither 1 nor 2. Question number 37. सो गाइस इसका आंसर है ऑप्शन सी बोथ 1 and 2. दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट है. ओके, दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो ऑब्वियसली इसका आंसर होगा ऑप्शन सी बोथ 1 and 2. Tides and currents on contact with the shores makes very little direct attack on the coastline. क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं. Consider the following statement. Number one, the most powerful agent of marine erosion are waves. The water that rushes up the beach and hurls rock debris against the land is termed as swash. Choose the correct code. Option A 1 only, option B 2 only, option C both 1 and 2, and option D neither 1 nor 2. Question number 38. Question number 38. तो क्वेश्चन नंबर 38 में दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है. फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड भी करेक्ट है. सो योर आंसर विल बी बोथ 1 and 2. ऑप्शन सी बोथ 1 and 2. The wave origin is due to the sweeping of winds over the water surface, which sets a series of undulating swells surging forward. A normal wave in an open ocean may measure feet high and 400 feet long. During storms, this is greatly increased depending on the speed and the duration of the winds. On approaching shallow water near the shores, their speed is reduced and the waves are curved or refracted against the alignment of the coast. Okay. Question number 39. Consider the following statement. Number one, waves armed with rock debris of all sizes and shapes charge against the base of the cliff and wear them back by the corrosion. Second, the constantly moving waves that transport beach materials such as boulder, pebbles and fine sands also hurls these fragments against one another until they broke down by attrition into very small pieces. तो choose the correct code यहाँ पे पूछा गया है. Your answer will be option, मतलब ऑप्शन है A 1 only, option B 2 only, option C both 1 and 2, and option D neither 1 nor 2. Question number 39. Yes. So question number 39 में फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ के ही पता चल रहा है कि करेक्ट है एकदम. And second one, the constantly moving waves that transport beach materials such as boulder, pebble, and the fine sand also hurls these fragments against one another until they broke down by attrition into very small pieces. ये भी absolutely correct है. So your answer will be option C, both 1 and 2. Marine agents of erosion operate in following ways to transform the coastal landscape, like corrosion, attrition, hydraulic action, and solvent action. Question number 40 पे आते हैं. This is the last question. On limestone coast, due to some action of sea water on calcium carbonate, sets of chemical changes in the rocks and disintegration takes place. Name the action acting in this process. Option A hydraulic action, option B solvent action, option C wave action, and option D wind action. Question number 40.
सो लाइमस्टोन कॉस्ट है, तो लाइमस्टोन को समस्या आप एक चीज समझ जाना कि लाइमस्टोन सिर्फ डिसॉल्व होता है, ठीक है, तो सॉल्वेंट एक्शन इस पर काम करेगा, तो इसलिए आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, सॉल्वेंट एक्शन। ओके, दिस प्रोसेस इज लिमिटेड टू द लाइमस्टोन कोस्ट ओनली। द रेट ऑफ marine erosion depends on the nature of the rock, the amount of rock exposed to the sea, the effects of tides and currents, and human interference in coast protection. Okay, so guys, thank you very much for being with me. Please use this code GG10 to get 10% discount, and join my telegram channel unacademy_Gaurav Gupta, and GG10 कोड आप अप्लाई करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। प्लीज हिट द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशंस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय सेशन। बाय बाय, टेक केयर।